FIFA World Cup 2026 पूरा इंडिया C5 पर Beta, good evening to one and all. Once again, welcome back to our YouTube channel NANDA Nursing Live. जो मैंने लाइव आस वीडियो को लाइक कर दियो एवं शेयर कर दियो एवं चैनल को जब फर्स्ट टाइम देखो बेटा चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर दियो, राइट ना? ठीक। सो गुड इवनिंग टू ऑल। वीडियो को लाइक कर दियो फटाफट टिके, राइट ना? वीडियो को लाइक कर दियो, देन हम स्टार्ट करबा, राइट ना? बेटा कल आम डिफेन्स मेकानिजम विषय पढ़ुले से समय पावर कट है एवं क्लास एंड हो गला, तापर आम कंप्लीट कर पारे गत कल क्लास, राइट ना? ठीक अच्छे। ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन 14 जो पढ़ुले ना, द डिफेन्स मेकानिजम वेयर ए पर्सन एट्रिब्यूट्स देयर अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स टू अदर्स इज कॉल्ड, ऑप्शन रे डिनाइल, ऑप्शन बी रे प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी रे सब्लिमेशन, ऑप्शन डी रे रेशनलाइजेशंस, राइट ना? सो करेक्ट आंसर कौन हबो हबार थिला बेटा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट ना? प्रोजेक्शंस। ठीक तो सो डिनाइल माने कौन बेटा? डिनाइल माने कौन हमें पढ़ी थिले? So denial is the refusal that a problem exists, beta, right? So the person not willing to accept that there is a problem, ये है denial, हाँ ना? नहीं बुझी पाला तो? refusal that a problem exists, that is denial, right? हाँ ना? नहीं, the person is not willing to accept that there is a problem and say denial state का रहेगा for long duration and disconnected from the reality, right? बुझल तो? क्वेश्चन आसी बेटा से डिस्कशन कर दूची मु, राइट ना? प्रोजेक्शन माने कौन बेटा? प्रोजेक्शन
एग्जांपल दोछि बेटा हला गोटे एग्जांपल देखि कहूछि प्रोजेक्शन जानि देबो हला सो मिस्टर मिस्टर समथिंग जार नाम को मिस्टर राजनंद has misplaced her wallet, right? Mr. Rajnanda misplaced her wallet. She blames her husband. Sorry, Mrs. Nanda. Sorry. Mrs. Nanda has misplaced her wallet. She blames her husband for being very careless, right? So that is projection. So निजे किसी गोटे मिसप्लेस कर दो बट तमे ब्लेम करिवो अलगा मानक ऊपर दैट इज प्रोजेक्शन बुझिल तो नेक्स्ट आउ कौन अच्छी बेटा सब्लिमेशंस कौन एग्जांपल दोछि बेटा ए सब्लिमेशन मींस बेटा ए नर्सिंग स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ए नर्सिंग स्टूडेंट इज इरिटेट विथ हर रूममेट है ना समस्त इरिटेट होंती ना निजर निजर रूममेट को नर्सिंग पढ़ला समय नर्सिंग स्टूडेंट इज इरिटेट विथ हर रूममेट हु इज कंस्टेंटली टॉकिंग लाउडली ऑन हर मोबाइल राइट कंसिस्टेंटली टॉकिंग लाउडली ऑन हर मोबाइल instead of quarreling with her means ता सहित झगड़ा करबा कथा किंतु she starts cleaning her cupboard and arranging her clothes neatly कौन होची तार रूममेट लाउडली कथा इरिटेट करूची आउ कौन होची से कांस्टेंटली लाउडली मोबाइल रे कथा होची तो तार संग से कौन करबा कथा ता सहित झगड़ा करबा कथा अना नहीं बट से कौन करबो सी स्टार्ट क्लीनिंग हर कपबोर्ड अना नहीं एंड अरेंज हर क्लॉथ्स नीटली सफा सुतरा भाव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अच्छा रेशनलाइजेशन कौन कहि दिलो ठीक फटाफट रेशनलाइजेशन बेटा कौन कहलो नर्सिंग स्टूडेंट फेल इन ए सब्जेक्ट सी state that she had worked hard but teacher did not explain the subject clearly हला बेटा सी भल भाव रे पढ़ीतिला किंतु फेल हला किंतु टीचर माने ताकू भल से पढ़े नथिले सेटा हला कोन रेशनलाइजेशन राइट ना सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अछि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर ऑप्शन ए सीवियर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन ऑप्शन बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑप्शन सी रे एंजाइटी ऑप्शन डी फोबियास सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा फटाफट आंसर कर दियो सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर राइट ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ना पक्का ना सीवियर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन ऑप्शन बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑप्शन सी एंजाइटी ऑप्शन डी फोबिया सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ठीक ना जो पेशेंट गुड़ा का एंटी डिप्रेशन को रेस्पोंड करंतिनी से मानको ECT दिया हुए राइट जो पेशेंट डू नॉट रेस्पोंड टू एंटी डिप्रेशन तांको कोन करा जाय इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दिया हुए बेटा right next question number 16 is what is flat effect option is excessive laughter option B is lack of emotional expression option C is rapid mood swings option D is constant crying so which option is the correct answer beta So Kaveri Malik, welcome to NANDA Nursing Life Family बेटा मेंबरशिप हेतुवारो धन्यवाद So first क्वेश्चन नंबर 16 अछि व्हाट इज फ्लैट इफेक्ट बेटा कौन होबा आंसर फटाफट आंसर कर देला
Option B. Option A is excessive laughter. Option B is lack of emotional expression. Option C is rapid mood swings. Option D is constant crying. So which option is the correct answer, beta? Flood effect होचे schizophrenia रो कौन बेटा symptoms हाँ ना नहीं. This is common symptoms of schizophrenia, right? Schizophrenia रो common symptoms. Schizophrenia हाँ ना नहीं. जानी चाहता बेटा. So correct option is option B, lack of emotional expression. Very good. Lack of emotional expression is the flat effect, and this is with chronic schizophrenia रे flat effect देखिबा को मिले. Chronic schizophrenia रे flat effect symptoms देखिबा को मिले, right? Next question, question number 17 है, which is a common side effect of antipsychotic medications? Which is a common most important MCQ बेटा, most important MCQs. ठीक मने रखिबार अछि. Which is a common side effect of antipsychotic medications? Option A is extrapyramidal symptoms like tremors, muscles rigidity. Option B is increased appetite. Option C is hair loss. Option D is low blood sugar. So which option is the correct answer beta? एंटीसाइकोटिक कौन करे बेटा? ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करे, राइट? डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे. ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर्स, राइट? डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवा जोगु, रिसेप्टर्स ब्लॉक करवा जोगु इट कैन कॉज बेटा कौन हबो? मोटर साइड इफेक्ट हुए. मोटर साइड इफेक्ट्स हुए. मोटर साइड इफेक्ट्स, राइट? सो कौन होची? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स होची हाँ ना नहीं. एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स होची ट्रेमर्स, मसल्स रिजिडिटी हाँ ना नहीं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अछि, फ्लाइट ऑफ आइडियाज. Flight of ideas is a symptoms characterized by option a continuous flow of speech with rapid changes from one topic to another. Flight of ideas is a symptoms characterized by option A a continuous flow of speech with rapid changes from one topic to another. Option B is inability to speak. Option C is speaking only in whispers. Option D is repeating one word. So which option is the correct answer बेटा? फटाफट के आंसर कर दियो. दीपक कुमार बेहेरा. स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ऑप्शन ए रश्मिता प्रधान. ऑप्शन ए अंजना बेहेरा. ऑप्शन ए सोनालिका पति. ऑप्शन ए right beta. Option A is the correct answer. Flight of idea is symptoms characterized by continuous flow of speech with rapid changes from one topic to another topics, right? This is seen in manic phase of bipolar disorder, right? This is seen in manic phase of bipolar disorder. Right now beta. Next question, question number 19 achi, Milai therapy refers to. Option A achi use of medications. Option B achi manipulation of the environment to create a therapeutic atmosphere. Option C achi individual talk therapy. So कौन है आंसर बेटा? फटाफट के आंसर कर दियो. Which option is the correct answer? Milai therapy refers to. Which option is the correct answer? The correct answer is option B, manipulation of the environment to create a therapeutic atmosphere. Right now, this therapy is used to promote patient recovery. Right now, beta. मिलो थेरापी यूज करके हमें कौन करछे? पेशेंट को प्रमोट करछी फ्रॉम टू रिकवर को. ना नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रचे, फोबिया इज ए टाइप ऑफ. ऑप्शन रचे मूड डिसऑर्डर. ऑप्शन बी रचे एंजाइटी डिसऑर्डर. ऑप्शन सी रचे थॉट डिसऑर्डर. ऑप्शन डी रचे पर्सनालिटी डिसऑर्डर. कौन हबो? फटाफट के आंसर कर देलो. Which option is the correct answer? Phobia is a type of which disorder? Which type of disorder beta? Rasmita Pradhan. Option B. Jasketan Chinda. Option B. So correct answer is
ऑप्शन बी एंजाइटी डिसऑर्डर हाँ ना नहीं फोबिया इज एंजाइटी डिसऑर्डर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक सिचुएशंस रे हमें कौन एक्सेसिव फियर हो जाउची एक्सेसिव फियर हो जाउची हमको दैट इज फोबिया हाँ ना तापर हमको कौन हबो एंजाइटी डिसऑर्डर हबो निहाती भाबरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 अछि व्हिच पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय instability in relationship self image and affects ऑप्शन ए एंटी सोशल ऑप्शन बी छै नार्सिसिस्टिक ऑप्शन सी छै बॉर्डरलाइन ऑप्शन डी छै हिस्ट्रियोनिक सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फटाफट आंसर कर दो personality disorder is characterized by instability in relationship self image and affects हाँ ना नहीं so which option is the correct answer ठीक फटाफट आंसर कर दिया बेटा so correct answer is option C है बेटा right now correct answer is option C borderline personality disorder struggle with fear right now struggle with fears and abandonment and impulsive behaviors right about relationship self image and affects right so correct answer is option C है next question number 22 anhedonia means beta important MCQ anhedonia means question सब आसी सारे छे anhedonia means बेटा ऑप्शन ए inability to experience pleasure ऑप्शन बी रे lack of sleep ऑप्शन सी रे overeating ऑप्शन डी रे fear of crowd so which option is the correct answer फटाफट आंसर कर दियो अनीता महांती सोनालिका पति ऑप्शन बेटा आंसर करो एनहेडोनिया मींस सोनालिका पति ऑप्शन ए वेरी गुड रूपाली महांत वेरी गुड बेटा अंजना बेहरा ऑप्शन ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑप्शन ए थैंक यू सो मच सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर राइट ना मैंने कही देला मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एनहेडोनिया मींस इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर राइट सो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए है ना नहीं so anhedonia कोउथिरे देखा जाबे बेटा clinical this is the clinical symptoms of which disorder this is the clinical symptoms of which disorder symptoms of major depressive disorder MDD major depressive disorder major depressive disorder major depressive disorder right this clinical symptoms seen in major depressive disorder right next question number 23 what is the primary nursing goal during the crisis phase of a psychiatric emergency so option A teach new coping skill option B ensure safety and stabilization option C analyze childhood memories option D discuss discharge plans so which option is the correct answer बेटा जो माने लाइव देखो वीडियो को लाइक कर दियो शेयर कर दियो एवं यदि चैनल को फर्स्ट टाइम देखो नियति भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दियो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट वन एंड ऑल जो लोग अभी देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए so correct answer is option B spiritual world right correct option spiritual world so correct answer is option B right now so crisis समय रे हमको immediate focus करो जे on managing the situation and keeping everyone safe केमती समझते safely रहिबे है ना नहीं तो safety and stabilization अब करेक्ट आंसर है ना हमें इंश्योर करो जे केमती समझते सेफली रहिबे एंड हाउ वी मैनेज द सिचुएशंस वी आर फोकस ऑन दैट situations only right now next question number 24 dementia is a disorder characterized by option A acute confusion option B chronic progressive decline in cognitive functions option C a type of anxiety option D high energy so which option is the correct answer which option is the correct answer beta dementia is a disorder characterized by so the चारटा ऑप्शन दिया है चारटा ऑप्शन हमको सिलेक्शन करिवार अछि so correct answer correct option is option B है वो option B dementia affects memory right dementia affects memory हाँ ना नहीं affects memory हाँ ना नहीं
cognitive function को decline करछि means affects memory, it may affects memory how कौन affects on thinking, affects on thinking and social abilities आउ कौन कौन बेटा जानी छ कि जदि कहि दियो राइट ए सब से कौन होचे डिक्लाइन कर कॉग्निटिव फंक्शंस को डिक्लाइन कर थिंकिंग रीजनिंग रिमेम्बरिंग अरे नहीं ये सब इफेक्ट पकोची या ऊपर है राइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 25 व्हिच असेसमेंट टूल इज यूज्ड टू इवैल्यूएट कॉग्निटिव फंक्शंस which assessment tool most important very important MCQs which assessment tool used to evaluate cognitive functions for example Alzheimer's disease मानो नहीं बेटा मूवी आइसला जाने छना सैयारा ना से क्या कौन मूवी थिला सैयारा देखी छ मूवी सैयारा गीत सुनी छ ना PYQ just PYQ बेटा सैयारा मूवी देखी छ ठीक है देखी छ यस सर सोनालिका पते वेरी गुड अब कौन है तो हीरोइन रो ना कौन जानी छ हीरोइन को कौन है था बेटा तर था ना मेंटल हेल्थ इश्यूज अच्छी ना झीर कौन हो तो सी फॉरगेटिंग भूली जाता है ना एमनेशिया अल्जाइमर्स डिजीज सोनालिका पते राइट बढ़िया अल्जाइमर्स डिजीज है झील को वेरी गुड ताको कौन हो तो भूलू तु बसी हाँ ना नहीं तो तापर से ब्लॉग्स बने के रखी से लेखिकी से तार डायरी यूज करूता बेटा देखी छ ना भूली तार बेसी फॉरगेटिंग भूली जाओ तो एबे काम कर तो भूली जाइथिबो लास्ट तक क्रोनिक को पढ़ाई सी जियो हीरोइन हाँ ना नहीं वेरी गुड तो ये सब असेसमेंट करबा पई को टूल्स आमे यूज करछे हाँ ना नहीं व्हिच असेसमेंट टूल इज यूज्ड टू इवैल्यूएट कॉग्निटिव फंक्शंस फॉर एग्जांपल अल्जाइमर्स डिजीज ऑप्शन ए मिनिमेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एमएमएससी ऑप्शन बी रहे बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी ऑप्शन सी रहे ग्लासगो कॉमा स्केल ऑप्शन डी रहे एपगार स्कोर कौन हबा करेक्ट आंसर इज व्हिच ऑप्शंस yes which option is the correct answer is which option कौन बोलेगा जो बोलेगा वो बनेगा नर्सिंग ऑफिसर्स सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वेरी गुड नीतू मैम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर MMSC मिनिमेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज यूज्ड फॉर assessing cognitive functions है ना नहीं cognitive impairment पाई हमें चेक करबा पई जानिबा पई हमें MMSC यूज करछे टूल यूज करछे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 which medication class is frequently associated with the risk of agranulocytosis low white blood cell count ऑप्शन ए रही फ्लुक्सोटिन ऑप्शन बी रही क्लोजापिन ऑप्शन सी रही हालोपेरिडल ऑप्शन रही लिथियम फ्लुक्सोटिन क्लोजापिन ऑप्शन सी रही हालोपेरिडल ऑप्शन रही लिथियम which medication was frequently associated with the risk of agranulocytosis बेटा agranulocytosis कही दियो टिके फटाफट टिके आंसर कर दियो फटाफट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर की ठीक है ऑप्शन ए कर लेनी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बी और सी और डी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा low white blood cells count means agranulocytosis हाँ ना नहीं agranulocytosis means low white blood cell count हाँ ना नहीं बुझी पल्ला तो ना बुझी पारू ना हाँ
ड्रग जोगु ए ग्रानुलोसाइटोसिस होची बेटा हाँ ना नहीं व्हिच ड्रग्स जोगु तो को ड्रग्स जोगु ए ग्रानुलोसाइटोसिस होची व्हिच मेडिकेशन क्लास इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विथ रिस्क ऑफ ए ग्रानुलोसाइटोसिस तो को मेडिकेशन देला पर ए ग्रानुलोसाइटोसिस होची ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक क्लोजापिन देला पर से कौन होची व्हाइट ब्लड सेल काउंट कौन होची डिक्रीज होची बेटा हाँ ना नहीं एंड दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हाँ ना नहीं सो हमको डब्ल्यूबीसी मॉनिटरिंग करिवार अछि डब्ल्यूबीसी को मॉनिटरिंग करिवार अछि हाँ ना नहीं मॉनिटरिंग डब्ल्यूबीसी इन क्लोजापिन यदि मेडिकेशंस पेशेंट को दिया होची ताहेले हमको कौन करिवार अछि मॉनिटरिंग करिवार अछि हाँ ना नहीं Next question number 27. What is confabulations in the context of cognitive impairment? What is confabulation in the context of cognitive impairment? Option is deliberate lying to deceive. Option B is unconsciousness. So unconscious feeling of memory gaps with fabricated information. Option C is inability to speak. Option D is sudden fear. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer बेटा तो बोल दीजिए बोल दो बेटा फटाफट बोल दीजिएगा फटाफट जिसको आता है जिसको नहीं आता है तो भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं so correct answer is option B. Option B is the correct answer right now unconscious feeling of memory gaps with fabricated information that is confabulations right. So Korsakoff syndromes रे होची confabulation to cope with memory loss है ना नहीं conditions like Korsakoff syndromes confabulation होची है ना नहीं next question number 28 sundowning. Sundowning refers to option A increased confusion and agitation in the evening hour. Option B is sleeping only during the day. Option C is a type of depression. Option D is hearing voices at night. So which option is the correct answer? So correct answer is option A increased confusion and agitation in the evening hours that is sundowning. And sundowning माने सूर्य अस्त तो सूर्य अस्त पर कौन होची confusion and agitations होची हाँ ना नहीं को पेशेंट मान कर हुए एटा बेटा with dementia पेशेंट हुए with dementia because environment dark है जे हाँ ना अंधार है जे तापरे ताको more confusion हवा हाँ ना नहीं more confusion or increased confusion right now with dementia patients है तो sundowning होची sundowning is common in patient with dementia right now. Next question number 29. What is transference? Option A is the nurse feeling towards the patient. Option B is the patient's displacement of feelings for significant figures and to the nurse. Option C is the process of discharge. Option D is transferring a patient to another ward. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer? Just get an N. What N beta? Option टा ठीक ठाक लिखा बेटा. दीपक कुमार ऑप्शन बी, अंजना बेहरा ऑप्शन बी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑप्शन बी, जसकेतन चिंदा ऑप्शन बी. सो which option is the correct answer है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आप लोग जो बोलोगे ना वही सच होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आप जितने लोग लाइव देख रहे हो ना सब लोग का नर्सिंग ऑफिसर नौकरी हो जाएगा. मेरा इतना विश्वास है आप लोग के ऊपर, पक्का आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट ना बेटा. तो जो मैंने राधे राधे भवानी शैन, राधे राधे मैडम जी. तो जो लोग वीडियो को देख रहे हो बेटा, वीडियो को लाइक कर दो एवं एंड शेयर भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज प्लीज प्लीज. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू वन एंड ऑल बेटा. सो
Which option is the correct answer? Option B is the correct answer right now. Next question, question number 30. The counter transference occurs when? Counter transference occurs when option A is the nurse projects feelings onto the patients. Option B is the patient projects feelings onto the nurse. Option C is family members interferes. Option D is the doctors changes the treatment. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer? बेटा फटाफट आंसर कर दो. Correct answer is option Girish Mahapatra. Option A. Spiritual world. Option A. Swagatika Jain. Option. Very good beta. Option A is the correct answer. Option A only correct answer. Counter reference is the nurse's unconscious emotional response to the patients. The nurse's unconscious emotional response to the patients, right? So nurse projects feelings onto the patients. Option A is the correct answer. This is the counter transference. Next question, question number 31. Which of the following is an extra pyramidal symptoms? EPS. Which of the following is an extra pyramidal symptoms? Option A dystonia. Option B high blood pressure. Option C increased heart rate. And option D rash. बेटा कौन कौन हुए ईपीएस रे डिस्टोनिया हुए बेटा हाँ ना नहीं डिस्टोनिया हुए आउ कौन होची बेटा एकाथीसिया हुए बेटा एकाथीसिया होची बेटा हाँ ना नहीं आउ कौन होची टार्डिव डिस्काइनेसिया होची टार्डिव डिस्काइनेसिया होची बेटा this all are the extra pyramidal symptoms, right? ये सब हुए बेटा डिस्टोनिया एकैथेसिया टार्डिव डिस्काइनेसिया, राइट? these all are the extra pyramidal symptoms. हाँ ना नहीं एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स रे बेटा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स देखा जाए, राइट? एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स रे सम एंटीइमेटिक्स ड्रग्स रे मध्य होइते बेटा एंटीसाइकोटिक्स, राइट? एंड सम एंटीइमेटिक्स ड्रग्स रे मध्य हेइथाए ईपीएस एंटीइमेटिक्स ड्रग्स रे भी बुझी पारला बेटा बुझी पारला ना कि नाय टार्डिव डिस्काइनेसिया वेरी गुड जस केतन चिंदा बेटा बुझी पारला सो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट? dystonia involuntary muscles contractions. Next question, question number 32. Psychosis is best described as option A a temporary mood shift, option B a state of loss of contact with reality, option C a personality disorder, option D a mild anxiety. So which option is the correct answer? So correct answer is option B, a state of loss of contact with reality, right? को साइकोसिस को फिर देखा जाए साइकोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हालुसिनेशंस बेटा हालुसिनेशंस और कौन बेटा डिल्यूजन होना नहीं एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज word salad? what is word salad बेटा what is word salad? What is word salad? Option A is speaking clearly but slowly. Option B is a jumble of words that are meaningless to the listener. So word salad
कोथरे देखा जाउछ बेटा सिजोफ्रेनिया पेशेंट राइट ना सिजोफ्रेनिया पेशेंट देखा जाए सिजोफ्रेनिया सिजोफ्रेनिया पेशेंट देखा जाए वर्ड सलाड है ना नहीं वी सीन इन सिजोफ्रेनिया राइट कौन अब ऑप्शन बेटा फटाफट आंसर कर लो which option is the correct answer speaking clearly but slowly option B is example of words that are meaningless to the listener option C is repeating the last word spoken option D is refusing to speak so which option is the correct answer so correct answer is option B right now option B is the correct answer option B is the correct answer example of words that are meaningless to the listener है ना नहीं next question number 34 is bipolar disorder involves cycles of option is only depression option is manic and depressive episodes option is only mania option is stable mood so which option is the correct answer bipolar involves cycles of so correct answer is option B manic and depressive episodes beta option B is the correct answer mania and depressions right next question number 35 is which drug is the antidote for benzodiazepine overdose which drug is the antidote for benzodiazepine overdose beta already mu कहि सारी छी so answer टा करबे तम मानकर टर्न ओवर हैला तम मानकर टर्न हेबे so which option is the correct answer antidote for benzodiazepine option is naloxone option which flumazenil option is protamine sulfate option is vitamin K so correct answer is flumazenil option B is the correct answer option B is the correct answer फटाफट आंसर कर दिया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कोपिंग व्हाट इज कोपिंग व्हाट इज कोपिंग बेटा व्हाट इज कोपिंग ऑप्शन है एवॉइडिंग ऑल स्ट्रेस जो मैंने पर्यंत वीडियो को लाइक करना प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया प्लीज यदि लाइक करना वीडियो को लाइक कर दिया एवं वीडियो को शेयर मध्य कर दिया एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया because it's my humble request to one and all question number 36 is what is coping option B is avoiding all stress option B is strategies used to manage stressful situation or emotions option C is giving up option D is taking medication so which option is the correct answer beta question number 36 the correct answer is option B strategies used to manage stressful situations or emotion that is coping that is coping strategies used to manage stressful situations or emotions stressful situation or emotion that is coping mechanisms or coping strategies next question number 37 delirium is characterized by option A chronic and permanent decline option B an acute fluctuating disturbance in attention and awareness option C only memory loss option D high mood so which option is the correct answer sonalika pati option B is the correct answer nahi B की option is the correct answer so correct option is option B right an acute fluctuating disturbance in attention and awareness so option B is the correct answer so delirium is usually reversible beta right na an identifiable medical cause like infection drug reaction right now that is delirium beta right delirium is reversible always reversible beta so this is acute fluctuating disturbance in attention and awareness so correct answer is option B next question number 30 evolution in schizophrenia means option is intense focus option B lack of motivation to initiate purposeful activities option C is excessive talking option D is inability to walk so which option is the correct answer is option B
lack of motivation to initiate purposeful activities. Option B is the correct answer. Evolution is a negative symptoms of schizophrenia. है ना नहीं यार schizophrenia कौन है नेगेटिव सिम्टम्स बेटा है ना नहीं नेगेटिव सिम्टम्स है ना नहीं so evolution in schizophrenia means lack of motivation to initiate purposeful activities right now. Next question देखिए बात question number 39. What does somatic delusion means? Option A false belief that one is being watched. Option B false belief that one has a physical defect or medical problem. Option D false belief that one is famous. Option D false belief that one is dead. So which option is the correct answer? So correct answer is option B, false belief that one has a physical defect or medical problems, right? तो पेशेंट कौन बिलीव करे बेटा सोमैटिक डिल्यूजन रे कौन होची पेशेंट में बिलीव दे हैव पैरासाइट्स कैंसर और ऑर्गन डिसफंक्शंस विदाउट एनी एविडेंस बिना एविडेंस रे से कौन विश्वास करे कि ता शरीर रे पैरासाइट्स अछि कि ताको कैंसर हे जेछि कि मोर किछि गुटे ऑर्गन डिसफंक्शन हे जेछि बोली से निजे निज प्रति विश्वास करे विदाउट एनी एविडेंस रे बिना एविडेंस रे से निजे विश्वास करूछि निजर किछि पैरासाइट्स अछि निज शरीर रे कि कैंसर हे जेछि कि ऑर्गन डिसफंक्शन हेछि बोली विश्वास करे दैट इज सोमैटिक डिल्यूजन बेटा right that is somatic delusion and false belief that one has physical defect or medical problems right. Next question number 40 अछि benzodiazepines are primarily used to treat option A psychosis, option B anxiety and sleep disorder, option C hypertension, option D infections. फटाफट आंसर कर दिया बेटा फटाफट आंसर कर दिया. Benzodiazepines are primarily used to treat option A psychosis, option B anxiety and sleep disorder, option C hypertension, option D infections. So which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दिया. Correct answer is option B is the correct answer है ना नहीं. बेंजोडाइजेपिन कौन करे पेशेंट को काम कर दे बेटा है ना नहीं एंड एंजाइटी को रिड्यूस करे पेशेंट को कौन करेगा काम द पेशेंट एंड रिड्यूस एंजाइटी दिस बेंजोडाइजेपिन सो एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करछि बेटा एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करे राइट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड जो माने आंसर बी करछो कैन एंजल ऑप्शन बी स्वागतिका जैना ऑप्शन बी spiritual world option B very good option B is the correct answer. Next question 41 what is stupor option which high activity option which a state of near unconsciousness or reduced responsiveness option C which fast speech option which high mood. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer? कौन बोलेगा उषा रानी सामल ऑप्शन बी कर दिलेनी ऑप्शन बी राइट. सोनालिकापति ऑप्शन बी कैन एंजल ऑप्शन बी कैन एंजल ऑप्शन बी. अच्छा स्टूपर सो रेस्पॉन्सिवनेस कमी जाए स्टूपर है ना नहीं रेस्पॉन्सिवनेस कमी जाए एक्सटर्नल स्टिमुलस ऊपर राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. Option B is the correct answer. A state of near unconsciousness or reduced responsiveness to external stimuli. Right. Next question number 42. Affect refers to option A the patient underlying mood, option B the outward emotional expression observed by the nurse, option C the patient memory, option D the patient speech rate. So which option is the correct answer beta? Affect refers to. Affect is the observable behavior beta, right? Affect is the observable behavior. So which option is the correct answer? Correct answer is option B. Right, the outward emotional expression observed by the nurses that is affect. है ना नहीं? हमें observe कर पारिबा
we observe the effect, right? Next question number 43. What is a sign of mania? What is a sign of mania? So correct answer कौन होगा बेटा? ऑप्शन ए decreased need for sleep and grandiosity. ऑप्शन बी रहे increased need for sleep. ऑप्शन सी रहे sadness. ऑप्शन डी रहे social withdrawal. So correct answer is which option? Correct answer is decreased need for sleep. Decreased sleep होची बेटा and grandiosity, right? Manic patient कौन हुए? Feel energetic, impulsive and overconfident, right? Manic patient कौन? Overconfidence and feel energetic and impulsive behaviors करती manic patient गुड़ा का, mania patients गुड़ा का, right? So correct answer कौन होगा? Option A होगा correct answer. Option A is the correct answer. जो मैंने option A करिचो से मैंने बहुत भला answer करिचो. शुभदीप साहू, संगीता दास, उषा रानी श्यामल, रश्मिता प्रधान, स्वागतिका मंडल, सुस्मिता लाकरा, संगीता दास, कैन एंजल, सुस्मिता पात्र. वेरी गुड बेटा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. जो मैंने ऑप्शन ए करछ से मैंने बहुत धन्यवाद तांको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज क्लैंग एसोसिएशन? व्हाट इज क्लैंग बेटा? जो भी वर्ड्स गुडा को कहू ना ए सब वर्ड का क्वेश्चंस रे पचारुची अना नहीं. इफेक्ट, क्लैंग एसोसिएशन अना नहीं, bipolar disorder, stupor, evolution, delirium. ये सब क्वेश्चंस आसीबो. क्वेश्चंस आसीबो भी हला. इंपोर्टेंट एमसीक्यू, राइट? इंपोर्टेंट एमसीक्यू. क्लैंग एसोसिएशन. व्हाट इज क्लैंग एसोसिएशन? स्पीकिंग इन राइम्स और साउंड. स्पीकिंग in rhymes or sound. Option B is speaking in whispers. Option C is speaking in another language. Option D is not speaking. So which option is the correct answer beta? Clang association. इटा को पेशेंट में देखा जाए बेटा. क्लैंग एसोसिएशन मैनिक एपिसोड से देखा जाए. So thoughts are connected by sound rather than meaning. बुझी पला ना? So and this is commonly seen in manic episodes, right? So which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दो. So correct answer is option A. Speaking in rhymes or sound. Speaking in rhymes or sound. आना नहीं? Right ना? Next question. Question number 45 रची. Post traumatic stress disorder (PTSD) symptoms include option A flashback and evidence of trauma related stimuli. Option B रची only high energy. Option C रची only laughing. Option D रची lack of memory. So which option is the correct answer? फटाफट के आंसर कर दो. So correct answer is कौन होगा बेटा? Option A होगा. Option A flashback and evidence of trauma related stimulus or stimuli. PTSD is anxiety disorder. Better PTSD is anxiety disorder, right? Anxiety disorder, right? Anxiety disorder and severe traumatic event जदि हमें experience करता है PTSD हुए बेटा. हाँ ना नहीं. बे serious traumatic event जदि हमें देख माने experience कर ले देखी थी बे ताहले सीटा PTSD और PTSD रे परिणत हो जिवो, राइट? सेटा मने पड़ले बेसिस एंजाइटी हबो बेटा. यदि फ्लैशबैक हैला ताहले हमको PTSD हबो. हना नहीं? बुझी पड़ला? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. Which therapy is based on changing irrational thought patterns? Option A psychoanalysis. Option B cognitive behavioral therapy (CBT). Option C ECT. Option D medication only. So which option is the correct answer? Change based on changing irrational thought patterns को माध्यम रे हमें करबो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी माध्यम रे, CBT माध्यम रे, राइट? तो CBT माध्यम रे हमें नेगेटिव थॉट्स को चेंज करि परबा बेटा. नहीं कि नेगेटिव थॉट्स को चेंज करि परबा. वी चेंज द नेगेटिव थॉट्स. आना नहीं?
with the help of cognitive behavioral therapy CBT, right? Next question number 47. Tardive dyskinesia each option is a movement disorder caused by long term antipsychotic use. Option B is a mood shift. Option C is a type of hallucination. Option D is a fear of water. So which option is the correct answer? Tardive dyskinesia. So repetitive involuntary movements of the tongue, mouth or face, that is tardive dyskinesia. Repetitive involuntary movements of the tongue, mouth और फेस आना नहीं देखी थी वो फेस करती केमती फेशियल एक्सप्रेशन होता है माउथ को केमती करता देखी ना नहीं केबे काको मु तो बहुत जन को देखी So correct answer कौन होगा बेटा? Tardive dyskinesia each option is a movement disorder caused by long term antipsychotic use. Option B is a mood shift. Option C is a type of hallucination. Option D is a fear of water. Option A, very good option A is the correct answer. Antipsychotics with the long term antipsychotics use होगा बेटा कौन होगा? Extra pyramidal symptoms होगा right? This is a extra pyramidal symptoms ना हाँ कि नहीं एबे तो पढ़ी थिले भूल जाओगे तो कैसे होगा? long term antipsychotic use hela tahele extra pyramidal symptoms ho that is tardive dyskinesia right option A is the correct answer. So tardive dyskinesia kona repetitive involuntary movement of mouth tongue or face sir mu bhul re apply bele experienced maguchi kona कहबी कौन apply करिबिनी कि आज लास्ट डेट थिला जो माने apply करना प्लीज क्लास न करके जाइए अप्लाई कर केते समय आज 12टा जाय सुधा रजिस्ट्रेशन कर अछि को माने रजिस्ट्रेशन करी न बेटा क्लास छाड़ी की जाई परिबो यू मे गो बेटा गुड इवनिंग सर रिंकू मजुमदार जो माने अप्लाई करना फटाफट जाके अप्लाई कर देन ताहले पाठ पढिबा बेटा मु मने पके देबा पई चाहूची आज टुडे इज लास्ट रजिस्ट्रेशन डे बेटा तापर आ रजिस्ट्रेशन करी परिबनी 6 तारीख ना बेटा टुडे इज द लास्ट रजिस्ट्रेशन डे up to 11:59 PM up to 11:59 PM बेटा जो माने करी न प्लीज जाओ आज रजिस्ट्रेशन करो जो माने एबे बीएससी नर्सिंग माने करो ये कम दिन हला रिजल्ट बाहर छि बेटा से माने प्लीज जाओ हला तमरो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आसु न आसु प्लीज एटलीस्ट जाके रजिस्ट्रेशन कर लो बेटा सर टिके कहि दियंतु कोन कहि बेटा सर मु भूल रे अप्लाई बेले एक्सपीरियंस डिटेल्स मागुची कोन करबी कोन और अप्लाई करबिनी कि एक्सपीरियंस न देले भी किछि असुविधा नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं एटा थोड़ी एम्स नर्सिंग एग्जाम दोछो बिना एक्सपीरियंस न दियो ना फ्रेशर में अप्लाई बेटा एबे बीएससी नर्सिंग पिला पास आउट हेचंदे से माने भी अप्लाई करि पारिबे दैट इज एक्सेप्टेबल काहे कि ना नेता मंत्री माने तांको फॉर रे लेखि कि देछंते हेल्थ मिनिस्टर को समस्ते जानी थी भी जो मैंने बीएससी नर्सिंग फ्रेशर मैंने लाइव रे जदी अच्छा जानी थी भी बेटा से मैंने लिखि कि देचंती कि हमको एलाउ करा जो अप्लाई करबा पई एबे रिसेंटली कम दिन होची रिजल्ट बाहर छि गुटे 7 8 10 डेज पूर्व रिजल्ट बाहर छि आज भी पिला अप्लाई करछंती आज मु कथा होतली कॉलेज ऑफ नर्सिंग बरहमपुर सहित किछि स्टूडेंट मानक सहित से मैंने कहतले आज भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई चली छि से मैंने रजिस्ट्रार मैडम सहित कथा है कि तांकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को तुरंत 3-4 आवर रे अप्रूवल नौछंती काहे ना टुडे इज लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ना नहीं इनिशियल रजिस्ट्रेशन कला पर तमे अप टू लास्ट जो डेट अछि केबे अछि बेटा लास्ट डेट 13 जुलाई अच्छी कि ना केबे अच्छी
सर टी कही दिंतु राज नंद कौन करेंगे 13 तारीख वेरी गुड 13 जुलाई ठीक मोर मन अच्छे ताले सर एक्सपीरियंस डिटेल्स मागुची मु फ्री फ्रेश कौन करेंगे प्लीज सर एग्जाम दे पारिबो बेटा मु कहली पूरा फ्रेशर किछि एक्सपीरियंस दरकार नहीं का क्या को दवा दरकार नहीं तमे जदी बेटा जॉब कुर्सी बोली देखिबो ताहले तुमको कौन करक पड़िबो एनओसी दबाक पड़िबो ये दबाक पड़िबो से दबाक पड़िबो बुझी परलो तो तमे फ्रेशर हिसाब रे अप्लाई कर दियो 13 जुलाई वेरी गुड सस्मिता लग रहा 13 जुलाई लास्ट डेट जाए अप्लाई करबार अछि हां ना नहीं 13 जुलाई जे हमको अप्लाई करबार अछि माने फाइनल ऑनलाइन सबमिशन अछि 13 जुलाई जाए फाइनल ऑनलाइन सबमिशन राइट बट आज लास्ट रजिस्ट्रेशन डे जो माने करेन प्लीज प्लीज कर अदरवाइज बेटा वंचित हो एते बड़ बंपर भर्ती रु वंचित हो प्लीज 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 जाके अप्लाई कर लो भूली जाइछ जदी अप्लाई जाके अप्लाई कर हला प्रेशर मानू किछि दरकार नहीं बेटा पाठ तो पर पढ़ी हे बेटा तमे किंतु जाके अप्लाई कर जो माने अप्लाई करन आ ठीक ठाक भाव रे अप्लाई कर हड़बड़ी रे किछि करबार नहीं निजे साइन भल से अपलोड कर निजर सर्टिफिकेट गुड़ा भल से अपलोड कर राइट निजर फोटो भल से अपलोड कर अदरवाइज बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे बेटा जो माने भी रिन्यूअल कर दो पुराना पिला जो माने अप्लाई करूछ रिन्यूअल कर रिन्यूअल सहित कहीं ना बहुत गुड़ा मु देखी 2000 जो 20 रे जो रिक्रूटमेंट एंड 2000 जो 23 रिक्रूटमेंट रे कौन हेतला बहुत गुड़े पिला कौन करथिले रिन्यूअल करी नथिले से सर्टिफिकेट गुड़ा अप्लाई कर दिथिले ए सॉरी अपलोड मार दिथिले तो तांको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तांको नहीं कि ये कर दिथिले बेटा तांको डिस्क्वालीफाई तो नहीं तांको एलाउ कर नथिले एक्सपीरियंस न देले भी चल हां न देले भी चलिबो कोई बात नहीं कौन एक्सपीरियंस देले कौन हबो न देले कौन हबो एक्सपीरियंस न देले भी चलो कौन स्टार मार्क देछि कि एक्सपीरियंस देखेबा पई स्टार मार्क देछि कि स्टार मार्क जदी देइतबो ईच एंड एवरी कॉलम से जदी स्टार मार्क देछि दैट इज मैंडेटरी बेटा स्टार मार्क देछि कि जदी स्टार मार्क देइनी सी ये रे ताहले किछि मैंडेटरी नाही इट इज ऑप्शनल बेटा जदी एक्सपीरियंस जदी शो कर कहीं कि ना फ्रेशर माने भी पार्टिसिपेट करेंगे ना बेटा नहले केस ही जो पुणी थे केस ही जो बुझी पाला ना फ्रेशर आल्सो फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई बेटा फ्रेशर माने भी आराम से करि परिबे किछि असुविधा नहीं जेतिक भी पाई छंते 2 वर्ष जो 2 थर एग्जाम हिचे 2020 रे एंड 2023 रे जो हिचे 2 थर एग्जाम बेटा के एक्सपीरियंस देज ना दे एक्सपीरियंस बिना फ्रेशर पिला सब पाई छंते ए वर्ष कौन है मु जाए ऑनलाइन को पशिनी कहार देखी ना किंतु एक्सपीरियंस बिना एक्सपीरियंस पिला अप्लाई कर मोर सांगर गोटे कंप्यूटर दुकान अच्छे सी तो अप्लाई कर दूचे तो देखो मु शुणी भी देखी भी एक्सपीरियंस दरकार हो ना है अप्लाई समस्त अप्लाई कर देछ ना जो मैंने देखुछ 21 नंबर ऑफ एस्पिरेंट देखुचंदी समस्त अप्लाई कर प्लीज बेटा टी कही देला यस और नो जो मैंने अप्लाई कर सारे यस कर दियो जो मैंने फाइनल सबमिशन करना भी मते कही देला बेटा दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा पाठ तो पढ़ी दब अप्लाई कर ठीक ठाक निर्भुल भाव में हमको अप्लाई कर अच्छी सुस्मिता लाकरा अप्लाई कर थैंक यू सर मु आज काली कौन आज काली आज कल राइट थैंक यू जस्ट केतन यस स्पिरिचुअल वर्ल्ड अप्लाई सर साई स्मिता प्रियदर्शनी यस मीन्स अप्लाई हो जाए कि आउ को मैंने अप्लाई करना फाइनल सबमिशन है नहीं यस सर मु कॉलेज नेम किछि अलगा शो होतला हेले मु सेटा को डॉक्यूमेंट्स वाइज जा अछि सेटा मु टाइप करके देछि कॉलेज ओके कोई बात नहीं से फाइनल टाइम रे से माने तो करेक्ट करिवे किंतु तमे ठीक डॉक्यूमेंट्स ठीक जगह रे माने अपलोड मारिबार अछि समझते करिसंते नै कि ताले किछि प्रॉब्लम होबो कि सर कोन किछि प्रॉब्लम होबो कौन प्रॉब्लम हो बोले भावुच बेटा किसी प्रॉब्लम हम ना तुम अप्लाई कर ना जो जोटा जो जगह दरकार बुलू रणम कर कौन पे करना बेटा कौन चाकरी दरकार नहीं कि बेटा एबे आम मानकर जदि प्रमोशन हो जाउछि ना बेटा से पोस्ट खाली पड़ी बोले ये सब पोस्ट बाहरी
हमर एबे बहुत जल्दी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स पोस्ट आमे माने प्रमोट होउछु ना बेटा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को आमे प्रमोट होउछु बोली हमर बेस लेवल पोस्ट वैकेंट होउछि ना बेटा आमे दीर्घ बहुत वर्ष हेलानी प्रमोशन पाइनु बुझी पलन ना बेटा एमाने प्रमोशन हमर प्रमोशन हबो से पोस्ट गुडा नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट गुडा खाली रहइबो ना आमे माने भी प्रमोट हबो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स को बेटा तो से पोस्ट गुडा वैकेंट रहइबो से पे तम मान को रिक्रूट करा होउछि बुझी पारलो ना बुझी पारनो तो यही सब मौका छाड़ने बाबा बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉर्चुनिटी बेटा जीवन रे गवर्नमेंट चाकरी हो गला मींस बेटा तुम दीदीटा जनरेशन को मैनेज कर दो जार कॉलेज ना नहीं टाइप करबा को पड़ुची भाई हाँ टाइप करबो कॉलेज जदि शो करने अदर ऑप्शंस आइसिबा ना अदर ऑप्शन गुटे आइसिबा सेतिरे क्लिक करके निजर मैनुअली टाइप करबो कोन अछि किछि असुविधा नै मैनुअली टाइप करि परबो जीएनएम सर्टिफिकेट जहा थिला कॉलेज ने बेटा किछि किछि कॉलेज कोन होछि अपग्रेड हे जाई छी ना किछि कॉलेज देखो जेमती भीमसार बोलला कि एमकेसीजी रो स्कूल ऑफ नर्सिंग किछि अपग्रेड हे छी ना गुडा चेंज चांज हे जाई छी तो तमे जदि से कॉलेज शो करने ताहले मैनुअली ना गुडा सेटा को टिके डर लागछ किछि डरिबार नाही बेटा काहे डरु ज थोड़ी तमे फॉर्जरी सर्टिफिकेट रे कोन चाकरी करबो कि फॉर्जरी सर्टिफिकेट पिला जॉइन हे जाउचंती डरू नांती तमे तो पाठ पढिछ एग्जाम दबो क्वालिफाई करबो किछि हबो नाही डोंट वरी वेरी गुड सोनालिका पति कहउचंती देखो किछि हबो नाही डोंट वरी कोई बात नहीं कोई डरने का नहीं तमे पाठ पढिबो एग्जाम द तम चाकरी के नेबे भी नाही हमारा पोस्ट को के हाथ मारी परिबेनी हला किंतु दिस इज मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेटा तापरे बाहरिबो न बाहरिबो गारंटी नाही एला कंटिन्यूअसली 5000 6000 7000 लेखा पोस्ट बाहर छी गटे तीनटा चारटा रिक्रूटमेंट हेलानी दिस इज थर्ड टाइम्स रिक्रूटमेंट कि ह्यूज नंबर ऑफ पोस्ट बाहर छी थर्ड टाइम्स है ना फर्स्ट OSSC सेकंड OSSC थर्ड OSSC जो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आईएसटी तो सही पे नहीं कि मौके पे छक्का मारने का मौका नहीं छोड़ने का राइट बुझी पारलो तो समस्त अप्लाई कर दीजिए ना ठीक हो गला दैट्स ऑल वीडियो को फटाफट लाइक कर दियो शेयर कर दियो और चैनल को यदि फर्स्ट टाइम देखुछो ताले चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आइसोलेशन और सोशल इज कंसर्न इन मेंटल हेल्थ बिकॉज इट ऑप्शन ए रची प्रमोट्स रिकवरी ऑप्शन बी रची वर्सन मोस्ट साइकियाट्रिक कंडीशन ऑप्शन सी रची इज हेल्पफुल फॉर फोकस ऑप्शन डी रची इट्स नॉट ए प्रॉब्लम सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा पर डिस्कशन करबा राइट ये सब विषय टिक पाठ पढ़ी देबा जो माने अप्लाई करना फटाफट जाओ प्लीज लेफ्ट हे की जाओ लाइव रु लेफ्ट हे जाओ एवं जाई कि अप्लाई करो प्लीज 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 मो रिक्वेस्ट कर जाई कि अप्लाई करो फर्स्ट तापर हम पाठ पढ़ीबा हैला पाठ पढ़ीबा पे पूरा पढ़ी छी रिकॉर्डेड क्लासेस सब रखा होची बेटा रिकॉर्डिंग क्लास भी तुम देखि पारिबो लाइव क्लास न देखिले भी जो माने अप्लाई करना प्लीज अप्लाई करो काहे कि ना लास्ट मोमेंट रे नहीं कि सर्वर इशू होबा OSSC गवर्नमेंट साइट गुडा को अने नहीं से माने एते केडा मेंटेनेंस करंती नहीं वेबसाइट को वेबसाइट बहुत सर्वर इशू हुए बेटा सर्वर जाम हबो सर्वर स्लो डाउन हबो बेटा देन परे अप्लाई करि पारिबनी हला समय थाउ तो अप्लाई कर दियो राइट सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 रा करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी वर्सन मोस्ट साइकियाट्रिक कंडीशन दैट इज नहीं isolation is a concern in mental because it is worsen most psychiatric conditions so option B is the correct answer so कौन हुए बेटा साइकोलॉजिकल हेल्थ कौन हुए कहला हमें लोकन का सहित इंटरेक्शन करबार अछि बट आइसोलेशन हे गेले कौन हबा सिम्पटम्स बेसी बाहर हो माने नहीं बुझी पल्ला तो सो आइसोलेशन हेले बेसी असुविधा सिम्पटम्स ता आहुरी बढ़ी बढ़ी चलिबो हैला सो इंटरेक्शन करिवार अछि सर मते एक्सपीरियंस डिटेल्स मागुछि बट मु फ्रेश मु कोन करबे किछि अप्लाई करबा दरकार नै बेटा मु कहली ना सेठी कोन मैंडेटरी देछि कि एक्सपीरियंस नो एक्सपीरियंस लिखिबो आई हैव नो एक्सपीरियंस दोछि जदि सेतरे सिलेक्ट करो एक्सपीरियंस किसी दरकार ना इले अप्लाई कर सारे
टेंशन काहे नौछ एक्सपीरियंस किछि दरकार नै म कहली बा एतो ओरिड हवा दरकार नै बिना एक्सपीरियंस रे चाकरी हेबो ए नर्सेट एम्स वाला एग्जाम नुह बेटा पिला सब एबे फ्रेशर पिला गुडा अप्लाई करूछंती तमे काहे डरुछ किछि एक्सपीरियंस हवा दरकार नै हला कोन खाली एक्सपीरियंस नर्सिंग ऑफिसर्स नबो की जो मैंने एबे पास टेंथ केस ही बेटा मु कहले बा हाई कोर्ट को केस कर देबे पिला बीएससी नर्सिंग पिला एबे पास आउट होचंती डिफरेंट कॉलेजेस रो से मैंने ऑलरेडी निज निजर एमएलए एमपी मानकर थ्रू रे लेखा दी मुकेश महालिंग सर को तो से बिना एक्सपीरियंस रे से माने जदी अप्लाई कर पाउछंती तमे काहे अप्लाई कर पाइबने बेटा मु तबे रिसेंटली कथा हेतिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एमकेसीजी रो स्टूडेंट मानक सहित मु मोर टीचर्स माने जो जोटी प्रिंसिपल अछंती एबे भी रिसेंटली कथा हेतिल हमर नवरंगपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेठी जो प्रिंसिपल अछंती से मोर जन टीचर सब कॉलेज रे मोर सब टीचर प्रिंसिपल अछंती बेटा एबे भीमसार बुल्लर जे अछंती सी मोर गाइड भीमसार बुल्लर प्रिंसिपल मोर एमएससी नर्सिंग कला बेले सी मोर गाइड थिले बेटा किछि असुविधा नै अप्लाई करी पारिबो आराम से टेंशन नवा दरकार नै बेटा राइट ना सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बुझी पाला ना नहीं ना कंफ्यूज एबे भी एक्सपीरियंस हुआ नहीं बेटा फ्रेशर माने भी अप्लाई करि पारे हला आउ किछि कहि पारेबेनी फिर भी जदी डाउट अछि आउ कहा कहा को पचार अछि जदी पचार बेटा मु तमरा डाउट क्लियर कर दिली फ्रेशर पिला भी अप्लाई करि पारे सेमते किछि नाही कि एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम 50 बेडेड हॉस्पिटल एमती लिखा है कि मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम 50 बेडेड हॉस्पिटल जेमती अलगा बड़ बड़ स्टेट मानकरे 50 बेडेड हॉस्पिटल एमती तो किछि नाही बेटा मु देखुतिली तमर ये किंतु बाकी रजिस्ट्रेशन तम पाखरे थिबा उचित बिना रजिस्ट्रेशन रे अप्लाई करि पारेबने तुम गोटे फर्स्ट ईयर पिला हे तो अप्लाई करबो कि सेकंड ईयर कि थर्ड ईयर जीएनएम हिथिबो आ तमर बैक पेपर थिबो गोटे पेपर आ मु थर्ड ईयर हिची गोटे पेपर सेना बैक हिची मु अप्लाई करबी बोली कहले हबो बने बेटा इम्पॉसिबल जे पर्यंत तम पाखरे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नाइ तमे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट हला सर रजिस्ट्रेशन निहाती दरकार न हले हबनी हां नर्सिंग रजिस्ट्रेशन इंपोर्टेंट बेटा तमे फाइनल सबमिशन करिबा पूर्वरु एटलीस्ट तम पाखरे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन थिबा उचित एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन आजी करो अप्लाई डेट 13 जाय अछि हां सो रजिस्ट्रेशन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जो जुलाई 13 जे अछि ना बेटा ए भितरे तमरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आसीबार अछि आ से जुलाई 13 लास्ट डेट रे भी तमे सबमिशन करले चलिबो मु भी फ्रेशर कोई बात नहीं रिंकू मजुमदार रजिस्ट्रेशन आसी गला फाइनल ताकू अपलोड मार देबो फाइनल सबमिशन कर देबो फाइनल सबमिट करिवो नै जे पर्यंत तमरा रजिस्ट्रेशन अपलोड करना कि रजिस्ट्रेशन नंबर देना फाइनल सबमिशन करिवो नै आज्ञा सर समझते पाखे पाखे अच्छे रजिस्ट्रेशन हाँ ठीक अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑप्शन ए आर यू फीलिंग सैड ऑप्शन बी व्हाट हैज योर एक्सपीरियंस बीन लाइक सिंस वी लास्ट मीट ऑप्शन सी डिड यू टेक योर मेडिकेशन ऑप्शन डी did do you hear voices so which option is the correct answer so open ended questions रा काण हुए जे भी जहार भी तमे इंटरव्यू नउथबो से काण करबा डिटेल्स कहबा share more details right and close ended questions रे yes or no रे चले हला हां ना शॉर्टकटली चले हां ना नहीं हां तो so which option is the correct answer beta option B is the correct answer what has your experience been like since we last met right so correct answer is option B next question number 50 insight in mental health refers to insight
in mental health refers to option A the ability to see clearly, option B the patient's awareness of their own illness and the need for treatment, option C the nurse's ability to guess thoughts, option D a type of delusion. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer beta? सो इनसाइट माने बेटा केमती से एक्सपीरियंस करछि तार इलनेस ऊपर कि तार मेंटल हेल्थ कंडीशन ऊपर से अवेयरनेस अछि ना नाही, अंडरस्टैंडिंग होछि ना नाही, ताको बुझा पडुछि ना नाही, है ना नाही, एंड ताको ट्रीटमेंट साहाଯ୍य दरकार ना, नीड फॉर सपोर्ट और ट्रीटमेंट दरकार ना नाही, से सब जानिबार उचित, दैट इज दिस इनसाइट हैला अवेयरनेस. So correct answer कौन होगा? Option B is the correct answer, right now. The patient awareness of their own illness and the need for treatment, right? So option B is the correct answer, right? Insight means कौन? The patient awareness of their own illness and need for treatment, right? So correct answer is option B. Next question, question number MSc रो last रे थी बेटा देखियो mental status examination है ना नहीं? Insight था lastly. अच्छी ना बेटा mental status examination रे insight. Next question, question number 51 is what is the main goal of cognitive behavioral therapy, CBT? Option A is to explore childhood conflicts, option B is to identify and correct distorted thought patterns and behavior, option C is to provide medication. So which option is the correct answer beta? And option D is beta to analyze dreams, right? So which option is the correct answer beta? Correct answer is option B. Option B. Option B is the correct answer. So CBT focus on to identify, correct distorted thought patterns and behavior, right now, and providing practical skill for change, right now beta, to provide practical skill for change, है ना नहीं? Cognitive behavioral therapy रे हमें कौन करछि केमती चेंज करछि practical skill माध्यम रे, है ना नहीं, ताको करैबार अछि, तापर धीरे धीरे तार behavioral changes हवा, right now. Next question, question number 52 is neologisms in speech are option is perfectly normal words, option B is newly created, option B is newly created meaningless words by the patient, option C is words in a foreign language, option D is whispered words. So which option is the correct answer beta? So option B is the correct answer, newly created meaningless words by the patients, right? And neologisms are common in schizophrenia, right? Common in schizophrenia. Neologisms common in schizophrenia, right? Next question, question number 53. Which of the following is an anti-anxiety or anxiolytic drug? Which of the following is an anti-anxiety or anxiolytic drugs? Option A is diazepam, option B is haloperidol, option C is lithium, option D is fluoxetine. So which option is the correct answer beta? So benzodiazepine used to treat anxiety na beta. Benzodiazepine है ना नहीं? Benzodiazepine used to treat कौन? एंजाइटी, है ना नहीं? बेंजोडाइजेपिन यूज करा जाए ना एंजाइटी को ट्रीट करबा पई, तो एंटी एंजाइटी और एंजियोलाइटिक ड्रग्स कोडा बेटा. Which option is the correct answer? So correct answer is option A, diazepam is a benzodiazepine, है ना नहीं? Diazepam is a benzodiazepine
or anxiolytic drugs to treat or to reduce anxiety, right? To treat or to reduce anxiety. Next question number 54 is hypomania. Hypomania, each option is a severe form of mania, option B is a less intense form of mania that does not cause marked functional impairment, option C is a type of depression, option D is a personality disorder. So which option is the correct answer? Correct answer is option B, beta, a less intense form of mania that does not cause marked functional impairment, right? So option B is the correct answer. So hypomania is the feature of कौन बेटा bipolar 2 disorder, bipolar 2 disorder. This is the feature of bipolar 2 disorder, right? Next question number 55, most important MCQ, 5-star questions beta, 5-star questions. The Minimental State the Minimental State Examination, the Minimental Status की State Examination ठीक लिखा है ना भूल लिखा है? The Minimental State Examinations MMSE score range from option A 0 to 10, option B 0 to 30, option C 0 to 50, option D Minimental State Examination कहते बेटा maximum score कहते हैं maximum score कहते बेटा MMSE रो 30 हाँ ना नहीं 30 तो मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE 30 ना नहीं तार स्टाटस हेबो अच्छा हो ठीक अच्छे स्टाटस हेबो मुझसे पहले पचारे तुम मिनिमेंटल स्टाटस एग्जामिनेशन ना मिनिमेंटल स्टेट एग्जामिनेशंस आंसर कर लो ना तुम आंसर करो ना करेक्ट आंसर बेटा मिनिमेंटल स्टेट एग्जामिनेशन राइट MMSE मिनिमेंटल स्टाटस नहीं मेंटल स्टाटस एग्जामिनेशन अलग बेटा एटा मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन राइट MMSE मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन टिके देखिबो बही अथर जाय कि मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशंस राइट MMSE MSE से मेंटल स्टाटस एग्जामिनेशन MSE हेले मेंटल स्टाटस एग्जामिनेशन सो करेक्ट आंसर कोन हो बेटा फटाफट टिके आंसर कर दियो ऑल आर गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B right 0 to 30 0 to 30 that is the mental state examination score range from 0 to 30 so maximum score of MMSE is 30 right mini mental state examination ठीक very good beta Sonalika Patti next question number 56 mutism each option is a constant speaking option B is a total absence of speech option C is a speaking only to family option D is a whispering so which option is the correct answer which option is the correct answer beta which option is the correct answer which option is the correct answer beta mutism so option B is the correct answer beta total absence of speech mutism is total absence of speech very good beta question number 57 which neurotransmitter is linked to schizophrenia the dopamine hypothesis which neurotransmitter is linked to schizophrenia the dopamine hypothesis
So option is increase dopamine level in specific brain pathway. Option B is decrease serotonin. Option C is increase high acetylcholine. Option D is low norepinephrine. So which option is the correct answer, beta? Which option is the correct answer? Which option is the correct answer, beta? फटाफट के आंसर कर दिया. आंसर करो फटाफट बेटा. इंक्रीज डोपामिन लेवल इन स्पेसिफिक ब्रेन पाथवे. ऑप्शन बी इज डिक्रीज सेरोटोनिन. ऑप्शन सी इज इंक्रीज एसिटाइलकोलिन. ऑप्शन डी इज लो एपिनेफ्रिन. सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा? Correct answer is question number 57. Correct answer is कौन बेटा? Option A. Increase dopamine levels in specific brain pathways. Right? Dopamine increase हेले बेटा कौन होची? Schizophrenia. ठीक? Dopamine increase हेले schizophrenia होची. हाँ ना नहीं? आउ कौन कौन हुए बेटा? Hallucination, delusion होची या जो dopamine increase जो हाँ ना नहीं? सिजोफेनिया रे कौन हालुसिनेशन डेल्यूजन होची डोपामिन जेतेबेले इंक्रीज होची हां ना नहीं डिक्रीज सेरोटोनिन हेले कौन हो बेटा डिक्रीज सेरोटोनिन हेले सेरोटोनिन डिक्रीज हेले कौन हो बेटा कौन हम डिक्रीज सेरोटोनिन हेले मूड डिस्टर्बेंस हवा स्लीप प्रॉब्लम हवा स्लीप डिसऑर्डर हवा बेटा हाँ ना नहीं मूड डिस्टर्बेंस हवा नेक्स्ट आउ कौन इंक्रीज एसिटाइलकोलिन हेले कौन हवा बेटा एसिटाइलकोलिन यदि इंक्रीज हैला इस हां इंक्रीज हैला कौन हबो एसिटाइलकोलिन यदि इंक्रीज हैला सिजोफेनिया हबो ना कौन एथि भी मेमोरी इफेक्ट पकोची सॉरी मेमोरी इफेक्ट लर्निंग मसल्स कंट्रोल ऊपर पकोची बट सिजोफेनिया हबने सॉरी कौन हबो ये लर्निंग ऊपर इफेक्ट पकेबा मेमोरी ऊपर इफेक्ट पकेबा हां ना नहीं इंक्रीज एसिटाइलकोलिन हेले लर्निंग मेमोरी ऊपर इफेक्ट प्रभाव पकेबा राइट एंड मसल कंट्रोल ऊपर मसल कंट्रोल लो नॉर एफिनेफ्रिन ले कौन हबा बेटा एंजाइटी डिसऑर्डर हबा एंजाइटी डिसऑर्डर राइट मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर हबा right next question number 58 negative symptoms are generally option is easier to treat with medication than positive symptoms option B is harder to treat with standard antipsychotics option C is not related to schizophrenia option D is only temporary right now so which option is the correct answer beta so correct answer is option B harder to treat with standard antipsychotics right harder to treat with antipsychotics so positive symptoms कौन है delusion hallucination हाँ ना नहीं negative symptoms apathy
एपाथी विथड्रॉल ये सब होचे नेगेटिव सिम्पटम्स ऑफ what. So negative symptoms are generally harder to treat with standard antipsychotic, right? बुझी पारल तो बेटा सर कहतु एबे अप्लाई करूची मु कौन करिबी हाँ अप्लाई कर जाओ अप्लाई करो बेटा रजिस्ट्रेशन कर दियो इनिशियल रजिस्ट्रेशन करिकी एबे एक्सपीरियंस मागुची सर मु रजिस्ट्रेशन बेले आशा और कंट्राक्चुअल नर्स चूज कर देछि एबे मत एक्सपीरियंस मागुची कौन करबी निजे निजे अप्लाई कला बेले बेटा देखि चाहे कि सब अप्लाई करबार अछि ना किंतु फाइनल सबमिशन पूर्वरु नहीं कि आउ तमे फाइनल सबमिशन पूर्वरु तुमको फाइनल एडिट करबा पे चांस दबो हला फाइनल एडिट पे चांस दबो मते गोटे मोर जूनियर फोन करतिला तार गोटे इश्यू थिला हला कि से एमएस स्कूल स्टैंडर्ड इन ओडिया देथिला तो से फाइनल जतले से भी सेम एडिटिंग करि पारने बोली फोन करतिला तो से कहला कि अरे एक्सपीरियंस किछि नहीं कहले किछि दबा दरकार नहीं बा तुमको मु कहूची जो जो जिंस रे स्टार मार्क थिबा देखिबो मैंडेटरी मनकर बॉक्स अछि हला मनकर एक्सपीरियंस अछि कि सर्टिफिकेट अपलोड करर अछि तापर साइड रे देथिबो देखिथिबो स्टार मार्क एमती देथिबो स्टार मार्क दैट इज मैंडेटरी यदि स्टार बुझी पारला तो से पे बेटा जतले गोटे चाकरी पे अप्लाई करछ ना हड़बड़ी किछि करबार नाही कि हड़बड़ी करबार नहीं आराम से अप्लाई करबार छी पूरा शांत शांत माइंड कूल माइंड रे अप्लाई करो हैला गड़बड़ी किछि कर नाही अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय उल्टा पुल्टा थिले से माने कोन करछंती हैरान करछंती तापरे बेटा कोर्ट को दौड़ुथो तमे कि दरकार कहलो हमर जहा अछि हमें जोटा पाठ पढिछि से गुडा को दबार अछि 1 बाय 1 पढ आ जदी बेटा तमे जानि न अलगा मानकर सहायता नियो निज फ्रेंड्स मानकर जो माने टिके चलक apply in a good CSC not anywhere ठीक अछि बेटा तमे मानकर तमे से एरिया रे जदी किछि नहांदी भलो जगह गुडी जाई कि तमे आखो पाखो एरिया को जाई कि भलो जोडी थिबो सेठी अप्लाई करो हाँ जदि डिलीट ऑप्शन दोछ बेटा डिलीट करि पारिबो से रजिस्ट्रेशन को डिलीट ऑप्शन आउसी जदि आगुरु दउतला इनिशियली डिलीट भी करि हबो डिलीट मारे न्यू अप्लाई करि हबो जदि करो किछ असुविधा नाही किंतु दुई थरा अप्लाई करले बेटा तमरो इशू हबो रिजेक्ट कर देबे डी फोन जदि दउछ नै कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कहूची ला देखी देखी चाहे कि करो बेटा बेसी चालाकी करबा भी ठीक नाही तमे से पे कहूची थरे अप्लाई करो भल से अप्लाई करो वंस अप्लाई करो थरे अप्लाई करो भल से अप्लाई करो थरे मात्र तम नारे अप्लाई हबार अछि भल से अप्लाई हबार अछि 10 थर अप्लाई करनी प्लीज जदि तम जो इंटीरियर एरिया रे मानकर जदि रहउछ मेटे भल जगह को मानकर तमे मानकर रहउछ मालकानगिरी रे तमे आसिलो भल जगह रे अप्लाई करो तमर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे आसी अप्लाई करो एमते नै कि तम आखो पाखर सहज केंद्र रे जेकी अप्लाई करबो बेटा करबो बेटा केमती हबो कहलो लास्ट मोमेंट आज तो बहुत सर्वर जाम थिबो रजिस्ट्रेशन समस्त करूथिबे आई तो सर्वर बेटा आज जो माने भी फाइनल आज आज एका रजिस्ट्रेशन करूथबा ना तांकर बहुत इश्यूज होतबो केतबेले एरर आउस्तबा केतबेले शो भी करनथबो केतबेले खोलनथबो आज बेसी लोड आज वर्कलोड बेसी थिबो साइट को मेंटेनेंस करूछंती वेबसाइट को राइट ना सर्वर पूरा जाम थिबो आज कोन पे तमे एंड मोमेंट जे वेट करबो
Can we get all the questions in PDF form for everyday class that we discuss for your practice and reference for this marathon? एटा दिया हबो निहाती भावरे सबू करा हो बेटा तुम मान पाए हिला तुम किंतु पाठ पढ़ आज जो डिस्कशन हेची बेटा मेनली तुम फास्ट अप्लाई करो हिला बहुत गुडा इश्यूज आसुची तुम मानकर भलो जगह रे अप्लाई करो जाई कि राइट ना काहे कि भूल रे दबो बेटा कहलो कौन पाई भूल रे दबो कौन पाई भूल रे दबो कोन भूल करिवार अछि कि भूल काई करबो तमे अजाणत रे हबो अलग कथा जानि जानि काई भूल करबो को डिलीट करिके आउथरे अप्लाई करो जदि होउची ऑप्शन डिलीट करिके एबे एका आउथरे री रजिस्ट्रेशन करो अप्लाई करो आउ रजिस्ट्रेशन ठीक ठाक अछि जदि ताहले तमरो ए जो अप्लाइंग टा जहा अछि नै कि तुम फाइनल सबमिट जदि कर दैछो ताहले डिलीट मारो आज एका आउथरे करो जदि होउनी तुम कौन सबमिट भी कर सारी ना कौन सबमिट तो कर नथिबो जेतु एक्सपीरियंस मागुची ताको बैक करी करी जाओ ना तमे ना बैक हो नै सेव हो गला बोली की काहे कि हबनी अप्लाई एबे Next question number 59. Sublimation is a defense mechanism where option is unacceptable urges are transformed into socially acceptable activities. Option which feelings are denied. Option which anger is taken out on others. Option which problems are ignored. So which option is the correct answer? So which option is the correct answer? Beta answer कर दो फटाफट. Question number 59 correct answer कौन होगा? Adjustable mechanism or adaptable mechanisms. Unacceptable urges are transformed into socially acceptable activities. Right now, sublimations. This is a healthy mechanism, right? Healthy defense mechanism. Next question number 60 is waxy flexibility, important MCQ. Right? Important MCQ. Waxy flexibility is a symptom seen in option A catatonic schizophrenia, option B bipolar disorder, option C anxiety, option D PTSD. So which option is the correct answer, beta? Which option is the correct answer? Which option is the correct answer, beta? Which option is the correct answer? So correct answer is option A, catatonic schizophrenia. Waxy flexibility is a symptom seen in catatonic schizophrenia. Option B is bipolar disorder. Option C is anxiety. Option D is PTSD. So correct answer कौन होगा? Catatonic schizophrenia. Waxy flexibility रे कौन बेटा? जेमती बॉडी पार्ट्स को जेमती कर रखी थी मानकर पेशेंट को हाथ टेक बोली कही थी हाथ टेकी का रखी थी wax bolia waxy flexibility, right? So this is the symptoms of catatonic schizophrenia, right? Now this is the symptoms of catatonic schizophrenia. Waxy flexibility देखा जाए catatonic schizophrenia रे, right ना बेटा? The patient allows their body parts to be placed in an uncomfortable position and holds them there for long periods, right? Right ना बेटा? Next question number 61 is what is erotomanic delusion? What is erotomanic delusion? Option A is a belief that one is wealthy. Option B is a false belief that another person. Option B is a false belief that another person, often someone of higher status, is in love with the patient. Option C is a belief that one has an illness. Option D is a belief that one is dead. So which option is the correct answer? So correct answer is option B, false belief that another person, or often someone of higher status, is in love with the patient.
So correct answer is option B. Right now, next question number 62 रचे borderline personality disorder patient often engage in option A रचे safe activities, option B रचे self harming behaviors to manage intense emotions, option C रचे excessive study, option D रचे quiet isolation. Borderline personality disorder patient often engage in option A safe activities, option B self harming behaviors to manage intense emotions, option C excessive study, option D quiet isolation. So which option is the correct answer beta? Correct answer is option B, self harming behaviors to manage intense emotions, right? Option B is the correct answer. Next question number 63 what is the purpose of assertive community treatment, ACT? What is the purpose of assertive community treatment? Option A to provide intensive integrated care for individual with severe mental illness in the community, option B to keep patient in the hospital forever, option C to force treatment, option D to sell medicines. Which option is the correct answer? Correct answer is option A. Option A is the correct answer beta, to provide intensive integrated care for individuals with severe mental illness in the community. Option A is the correct answer. Next question number 64 serotonin syndrome is a risk when taking, option A too many antidepressant, for example SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors, right? Too many antidepressant, option B antibiotics, option C laxative, option D vitamins. So which option is the correct answer beta? Which option is the correct answer? So correct answer is option A, that is too many antidepressant. This is the so too many antidepressant नेले कौन हो बेटा serotonin syndrome हबो कहीं ना excessive serotonin कौन हबो in CNS रे excessive serotonin नहीं जो बेटा excess serotonin नहीं जो due to too many antidepressant जो कौन हबो central nervous system रे excess serotonin नहीं जीवो, and this is life threatening condition for patient. This is life threatening condition for patient, right? Next question number 65 rajo, which of the following is a physical assessment in mental health? Option A checking vital signs and overall health, option B analyzing dreams, option C reading poems, option D asking about childhood. So which option is the correct answer beta? So correct answer is option A, checking vital signs and overall health, right? Checking vital signs and overall health. Next question number 66, which question number 66 is flight of ideas is most common in, important MCQ beta, important MCQ. Flight of ideas is most common in, option A depression, option B manic episode, option C phobias, option D autism. So correct answer is beta option B, manic episode re flight of ideas देखा जाए थे, right now. कौन हुए वन टॉपिक रु अनदर टॉपिक को पळेबो दौड़ीबो हैला. Next question number 67 रचे what is apathy? Option A रचे intense emotion, option B रचे lack of feeling, option B रचे lack of feeling, emotion, interest or concern, option C रचे high interest, option D रचे rapid speech. So which option is the correct answer beta? What is apathy? Apathy is a negative symptoms beta in many chronic psychiatric disorder. Apathy is a negative symptoms in chronic psychiatric disorder, right now. So which option is the correct answer beta? Correct answer is option B, a lack of feeling, emotion, interest or concern, right? That is apathy is a lack of feeling, emotions, interest or concerns beta, and this is the negative symptoms of all chronic psychiatric disorder. Right, next question number 68 is tricyclic antidepressant TCA carry
a risk of option A रचे cardiac arrhythmia in overdose, option B रचे high blood pressure, option C रचे hair loss, option D रचे increased energy. So which option is the correct answer बेटा फटाफट आंसर कर दियो. Tricyclic antidepressant. So correct answer is option A, cardiac arrhythmia in overdose. Right. Next question, question number 16. Isolation in therapy refers to option A is leaving the patient alone, option B is a defense mechanism where a person separates an emotion from painful thought, option C is a type of punishment, option D is sending the patient home. So which option is the correct answer beta? So correct answer is option B, a defense mechanism where a person separates an emotion from painful thought. Next question, question number 70, which is a sign of elder abuse? Which is a sign of elder abuse in mental health? Option A is frequent social visits, option B is unexplained bruises, poor hygiene or withdrawal, option C is consistent attendance at appointments, option D is happy mood. So which option is the correct answer beta? So correct answer is beta option B, right? Next question, question number 71 is psychiatric rehabilitation focuses on फटाफट सॉरेवा 100 क्वेश्चन फटाफट सॉरेवा राइट और 30 क्वेश्चंस रहिला मेंटल हेल्थ रो हला फटाफट सॉरेवा. So question number 71 is psychiatric rehabilitation focus on option A is curing the disease entirely, option B is improving the quality of life and functionality of people with mental illness, option C is only giving pills, option D is hospital stay. So which option is the correct answer beta? Which option is the correct answer? So correct answer is option B है बेटा, improving the quality of the life and there is looking at a screen, option C is using a projector, option D is speaking loudly. So correct answer is option A है बेटा. Projection is a seeing your own faults in others. Projection is seeing your own faults in others. Projection important MCQ beta. Projection is seeing your own faults in others. Right now, next question, question number 73. What is restraint? What is restraints in psychiatric unit? Option A is used as a first line treatment. Option B is a last resort to prevent imminent harm to the patient or others. Option C is used to save time. Option D is used for all patients. So which option is the correct answer beta? Option B is the correct answer. A last resort to prevent imminent harm to the patient or others. That is restraint in psychiatric unit. Next question, question number 74 is cognitive impairment effects. Cognitive impairment effects. Option A is memory, attention and language. Option B is only mood. Option C is only walking. Option D is only sleep. So which option is the correct answer beta? Which option is the correct answer? फटाफट आंसर करो. Correct answer is option A, memory, attention and language. That is cognitive impairments हेले बेटा कौन कौन ऊपर effect प्रभाव पड़ेगा? memory ऊपर, attention ऊपर and language ऊपर, right? Next question, question number 75 रची. Which is a therapeutic response? Which is a therapeutic response? Option A you should not feel that way. Option B tell me more about how that made you feel. Option C everything will be fine. Option D why do you do that? Therapeutic response means beta patient experience. है ना patient experience. So which option is the correct answer? Option B is the correct answer beta. Tell me more about how that made you feel. Right. Next question, question number 76. What is the primary purpose of therapeutic environment? What is the primary purpose of therapeutic environment? So which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दो, फटाफट आंसर करो. Which option is the correct answer beta? Correct answer is option B, to provide a safe structured environment that promotes recovery and social interaction. So option B is the correct answer. Next question, question number 77. Rationalization is a defense mechanism where the person, option A uses false logic to justify unacceptable behavior or feelings. Option B forgets everything. Option C blames others. Option D acts like a child. Malik, Kabiri Malik, namaskar, namaskar. Thank you so much for. Thank you so much. Thank you so much. Membership fine. Thank you so much. Kabir Malik. So welcome to our family बेटा. बेटा जो भी जहाँ भी क्लास ही सारी से सब देखी दबा लाइव
लाइव सेक्शन को जाइए बेटा देखिबा सेठी सब अछि हैला। सो OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम रो कोर्स अछि बेटा सेठी देखिले सब वीडियो अछि। लाइव ऑप्शन को जीवो अदरवाइज कोर्स ऑप्शन कोर्स सेक्शन को जीवो हैला। लाइव सेक्शन को जीवो अदरवाइज कोर्स सेक्शन को जीवो बेटा सेथिरे अछि। सेथिरे OSSC नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन और जो अच्छी से देखिले तुमको मिल जाए सब राइट। सब क्लासेस सेठी सेव ही अच्छी सब क्लासेस प्रीवियस क्लासेस गुडा देखि परबो जो माने भी एबे एबे देखुछ राइट ना। कोर्सेस को गला पर बेटा सेठी लिखा हेतबो OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशन लिखा हेतबो OSSC नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम प्रिपरेशन करके गोटे सेक्शन अच्छी राइट। इतरे गले बेटा सब वीडियो अच्छी से देखी क्लिक करके देखि पारिबो। आ महामाराथन क्लासेस जे देखिबार अछि सेठी भी अछि बेटा कोर्स रेका OSSC नर्सिंग ऑफिसर महामाराथन नर्सिंग ऑफिसर महामाराथन राइट बेटा। हमें बहुत गुडा क्वेश्चंस देखिबा आपको ये तो आरंभ राइट। ये तो आरंभ बहुत भल भल क्वेश्चंस हमें नहीं के आसीबा। लाइव क्लास टाइम बेटा 6 PM एवरी डे 6 PM एवरी डे 6 PM एवरी डे 6 PM रे हमें जॉइन होचे हैला 6टा रो 9टा 10टा 11टा जे क्लास होची हैला। इलेक्ट्रिकल इशू वर्षा होतला बहुत जोर सोर रे से पे इलेक्ट्रिकल इशू होतला पावर कट होतला अना नहीं से पे ये होतला से पे भी व्यवस्था कर दिया सरलाणी बेटा बहुत जल्दी तार प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाबा। इलेक्ट्रिकल इशू रो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाबा बहुत जल्दी सब सामान आसी जाइए बट खाली लगे अच्छी बेटा। तो आमर इंटरप्शन हेनी टोटाली आउ इंटरप्शन हेनी क्लासेस वन चलला मैंने कंटिन्यूअसली चलवा है। तो जो मैंने वीडियो देखुचे बेटा वीडियो को फटाफट लाइक कर दिया शेयर कर दिया। सर लाइव क्लास टाइम 6 PM बेटा 6 PM निवेदिता नायक बेटा 6 PM रे का क्लास होची 6 PM रु स्टार्ट हो जाउची। मु मोर ड्यूटी रो आसला परे बेटा 6 PM रे मु जॉइन हो जाउची तम मान सहित इंटरैक्शंस को डिस्कशन करची राइट ना। सो वीडियो को लाइक कर दे बेटा एवं जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम देखो चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर दे निज निज सांग मान को शेयर करो एवं निज निज सांग मान को मध्य जॉइन कराओ क्लासेस रे राइट। निहाती भाव में समस्ते जने मोर हृदय सहृदय सहित कि समस्ते जने नर्सिंग ऑफिसर निहाती भाव में हम नर्सिंग प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन क्लास करंतु हम निहाती हम बेटा बेटा ये जाने तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पक्का पक्का क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस बेटा सेटा भी क्वेश्चंस आसीबो बेटा हमें किछि किछि इंक्लूडिंग भीतर जो थ्योरी क्लासेस होची सेथिरे भी सिचुएशनल बेस और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैला नर्सिंग प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आसीबो बेटा आसीबो आसीबो ए तो स्टार्ट हेची गुटे 4टा 5टा क्लास बेसी क्लास हेनी बेटा 7 डेज गुटे क्रुशियल MCQ हमें पढुतले एबे हमें थ्योरी पूरा सब्जेक्ट वाइज जहा सिलेबस रे अछि ना सब कवर अप करबा दौड़े दौड़े पढिबा फटाफट आंसर करबार अछि से पे हैला। फिर भी किछि किछि डिस्कशन करछे मु जस्ट क्वेश्चंस पढी पढी आंसर करी करी जीवा भितरे किछि किछि क्वेश्चंस को डिस्कशन करछे बेटा जा द्वारा तुम गुटे क्वेश्चन 5टा 6टा क्वेश्चंस भी पाई पारिबो बोली कि हला मु ट्राई करछे बेटा जेमति तम मान को भल से बुझी पारि भल से पढे पारिबे मोर फुल एफर्ट लगे कि ट्राई करछे बेटा चेष्टा करछे जेमति समस्त को नर्सिंग ऑफिसर करि पारिबे मो माध्यम रे मो एजुकेशन माध्यम रे राइट ना। सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा बेटा वीडियो को लाइक कर दिया शेयर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू वन एंड ऑल बेटा। सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पर्सनलाइजेशन माध्यम रे कोन होचे एंजाइटी को हमें रिड्यूस करि परिबा ह ना नै एंड पेशेंट So option A is the correct answer. Uses false logic to justify unacceptable behavior or feelings. Right? Option A is the correct answer. Next question, beta. Next question number 78. Catatonia is a state characterized by option A is marked immobility or excessive purposeless motor activity. Option B is extremely fast speech. Option C is intense fear of heights. Option D is lack of appetite. हमको ज्यादा से ज्यादा MCQ देखी की जीवार अच्छे बिफोर
when appearing our OSSC nursing officer exam है ना नहीं at least 10,000 to more 10,000 plus MCQ देखिए जीवार अच्छे बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए जीवार अच्छे ताहले हमरो सिलेक्शन पक्का हबो बेटा So question number 78 is catatonia is state characterized by option A marked immobility or excessive purposeless motor activity option B is extremely fast speech option C is intense fear of heights option D is lack of appetite so which option is the correct answer so catatonia patient कौन होची बेटा excessive mobility होची बेटा immobility होची marked immobility or excessive होची then purposeless motor activity हुए बेटा right ना restless movement हुए बेटा restless movement हुए right restless movement हबो catatonia रे movement right frozen like one position रे रहिबो for long hour right this is catatonia कैटाटोनिक पेशेंट रे एमती हुए बेटा फ्रोजन मतलब कौन जेमती बरफ वन पोजीशन रे था फॉर लॉन्ग आवर्स और फॉर लॉन्ग टर्म सी भलिया कैटाटोनिक पेशेंट रे सेमती हुए बेटा राइट सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 which of the following is an SSRI selective serotonin reuptake inhibitors ऑप्शन है Fluoxetine option B रचे haloperidol option C रचे lithium option D रचे diazepam which option is the correct answer बेटा SSRI is the first line treatment for depression बेटा SSRI is a first line treatment for schizophrenia sorry depression SSRI is a fast line treatment for depression, right? So which option is the correct answer? But option A is the correct answer. Fluoxetine is an SSRI. Fluoxetine is an SSRI, right? Option A is the correct answer. Next question number 80 rachi. What is labial effect? What is labial effect? Option A is always happy. Option B is rapid abrupt changes in emotional expression. Option C is no expression. Option D is deep sadness. So which option is the correct answer? So correct answer is option B beta. Option B is the correct answer. Rapid abrupt changes in emotional expression, that is labial effect. Patient कौन हो patient में cry, patient में laugh with very short time किसी समय short time पे है ला सांग कांदा वो सांग हंस दो for short time है ना नहीं that is labial effect बेटा changes in emotional expression बेटा abrupt changes in emotional expression laugh कर दो and cry कर दो within a very short time frame beta right next question number 81 is psychosomatic disorder involve option A is physical symptoms that are worsened by psychological factors option B is symptoms that do not exist option C is only mental symptoms option D is a type of surgery so which option is the correct answer beta which option is the correct answer so correct answer is option A physical symptoms that are worsened by psychological factors that is psychosomatic disorder involve physical symptoms that are worsened by psychological factors next question number 82 rachi beta reframing in therapy means option A forcing the patient to change their mind option B helping the patient look at a situation from a different more positive perspective option C ignoring the problem option D changing the room furniture so which option is the correct answer so correct answer is option B helping the patient look at a situation from a different more positive perspective so option B is the correct answer for question number 82 reframing in therapy means right
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है डिस्प्लेसमेंट इज ए डिफेंस मेकानिज्म हमें जाने चाहिए डिस्प्लेसमेंट इज ए डिफेंस मेकानिज्म इन व्हिच ऑप्शन ए फीलिंग आर डायरेक्टेड टुवर्ड ए सेफर और लेस थ्रेटनिंग टारगेट ऑप्शन बी is feeling are hidden option C is feelings are ignored option D is feeling are shared so which option is the correct answer बेटा which option is the correct answer फटाफट आंसर कर दे बेटा दिस इज महा मैराथन क्लास बेटा फटाफट हमको आंसर करवार अछि फटाफट आंसर देखबार अछि 100 क्वेश्चन देखबार अछि 10,000 क्वेश्चन हमको यदि 1 मंथ रे 30 डेज रे सरेबार अछि बेटा ताहले हमको फटाफट आंसर करबा को पड़िबो दौड़े दौड़े आंसर करबा को पड़िबो ताहले हमें 10,000 क्वेश्चंस गोटे मास रे देखि परिबा हम पाखे बहुत कम समय अच्छी दौड़े दौड़े सब क्वेश्चन देखबार अच्छी है ना एवं मन भी रखबार अच्छी तो क्वेश्चन नंबर 83 अच्छी डिस्प्लेसमेंट इज डिफेंस मेकानिज्म इन व्हिच ऑप्शन इज फीलिंग्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड ए सेफर और लेस थ्रेटनिंग टारगेट ऑप्शन बी इज फीलिंग्स आर हिडन ऑप्शन सी इज फीलिंग्स आर इग्नोर्ड ऑप्शन डी इज फीलिंग्स आर शेयर्ड so which option is the correct answer beta correct answer is option A feelings are directed towards a safer or less threatening target right now next question number 84 is what is akathisia what is akathisia so option A is state of motor restlessness and inability to sit still option B is slow hearted option C is a type of memory loss option D is a lack of speech so correct answer is option A state of motor restlessness and inability to sit still akathisia हमें पढ़ुतिले ना extra pyramidal symptoms extra EPS पढ़ुतिले ना बेटा extra pyramidal symptoms akathisia extra pyramidal symptoms कौन पे extra pyramidal symptoms akathisia होची एंटीसाइकोटिक्स ड्रग पाई एंटीसाइकोटिक्स आउ थरे तुमको रिमाइंड करछि एवं रिवाइज कर दोछि एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स रो कॉम्प्लिकेशंस काण होछि बेटा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स होछि एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स रे डिफरेंट स्टेजेस होछि एकाथीसिया माने कोन स्टेट ऑफ मोटर रेस्टलेसनेस एंड इनएबिलिटी टू सिट स्टिल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 रे मिले थेरेपी इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ नर्सिंग ऑप्शन इज साइकियाट्रिक नर्सिंग ऑप्शन बी इज सर्जिकल नर्सिंग ऑप्शन सी इज पीडियाट्रिक्स नर्सिंग ऑप्शन डी इज ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर obviously melee therapy is associated with which subject beta psychiatric nursing easy questions ana nahi Next question number 86 reaction formation is a defense mechanism right reaction formation is a defense mechanism हमें जाने चाहिए where option A is a person express the opposite of their true unacceptable feelings option B is a person forgets everything option C is a person blames others option D is a person cries so which option is the correct answer is option A a person express the opposite of their true unacceptable feelings So correct answer is option A, right? Next question number 87 is a psychiatric emergency include option A is a suicidal or homicidal threats, option B is a mild anxiety, option C is a cold, option D is a normal stress. So correct answer is option A. Option A is the correct answer. So psychiatric emergency रे कण दरकार बेटा immediate intervention दरकार to prevent harm to the patients. To prevent harm to the patient or others. That is psychiatric emergency beta immediate intervention दरकार psychiatric emergency पाए so suicidal हो कि homicidal threats हो इमन को require immediate intervention beta to prevent harm to a patient or others right ना next question number 88 अच्छी which is a sign of burnout in nurses which is a sign of burnout in nurses option is high job satisfaction option B is emotional exhaustion option B is emotional exhaustion, depersonalization and reduced sense of accomplishment. Option C is a good team work. Option D is a passion of her work. So which option is the correct answer, beta? Which option is the correct answer? So correct answer is option B, emotional exhaustion, depersonalization and reduced sense of accomplishment. Right now.
सो बर्नआउट केते बेले हबो बेटा हाई स्ट्रेस हबो माने ना हाई स्ट्रेस ले प्रोफेशनल वेलबीइंग रे हाई स्ट्रेस जदी हला बेटा ताले बर्नआउट हबो माने ना नर्सेस मान को ऊपर ओवरलोड हबो ताले बर्नआउट हबो माने ना बर्डन वर्क जणे थिबो 100 टा पेशेंट को ट्रीट करथबो निहाती भाबरे स्ट्रेस हबो माने ना बर्नआउट निहाती भाबरे हबो दौड़ुथबो माने ना नाइट ड्यूटी थी ताले दौड़ुथबो पला बर्नआउट निहाती भाबरे हबो तो इमोशनल एग्जिशन हबो माने ना निहाती इमोशनल एग्जिशन हबो होछि ना बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मानकर जणे जणे 50 60 100 पेशेंट देखबा पड़ुछि ड्यू टू स्टाफ क्राइसिस इन एवरी हॉस्पिटल बेटा इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एवरी हॉस्पिटल रे स्टाफ क्राइसिस से पे हजार हजार नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी बाहर छी दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बेटा निहाती भाव रे सिलेक्शन हे जिवो किंतु पाठ पढिवार अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 अछि dysthymia now called persistent depressive disorder is option is a severe short term depression option which is a chronic long term but less severe form of depression option is a type of mania option is a type of phobia so which option is the correct answer beta which option is the correct answer so correct answer is option B is the correct answer beta right next question number 90 splitting is a defense mechanism of often seen in option is borderline personality disorder option B is phobias option C is normal anxiety option D is depression so which option is the correct answer beta correct answer is borderline personality disorder it is black and white thinking beta it is the black and white thinking right black and white thinking where a person view others as either all good or all bad all good or all bad से पे हमें कोचे या को black and white thinking black and white thinking right splitting is a defense mechanism often seen in borderline personality disorder so एथिरे कोन होची एई borderline personality disorder or splitting रे कोन होची black and white thinking आसे person रो and से कोन भाबे either all good or either से कोन कहबे all bad right ताको जोटा ठीक लागला all good otherwise भलो हे भी खराब भी हेतिला all good कहबो आ भलो हेतिले भी all bad कहबो right that is the defense mechanism जेको निजे एडजस्ट करबा पई next question number 91 what is the role of the nurse in medication compliance what is the role of nurse in medication compliance so option A is forcing the patient to take pills option B is educating the patient on the benefits side effects and importance of adherence option C is hiding pills in food option D is stopping medication if it is too expensive which option is the correct answer beta मैं फोर्स करबा के पेशेंट को मेडिसिन मैं टैबलेट खाइबा पई एंड ऑप्शन बी जे हमें पेशेंट को एजुकेट करबा व्हाट अबाउट द माने बेनिफिट्स ऑफ द मेडिकेशंस अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ द एडहेरेंस इंपोर्टेंस ऑफ द मेडिकेशन अबाउट ट्रीटमेंट ऑप्शन सी जे हाइडिंग पिल्स इन फूड सो हमें खाद्य रे कोन मेडिसिन मिसे दबा की हाइड कर रखिबा की ऑप्शन डी इज स्टॉपिंग मेडिकेशन इफ इट इज टू एक्सपेंसिव हमें मेडिसिन रो दाम एक्सपेंसिव तो हमें मेडिकेशन बंद कर दबा की सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 91 रो करेक्ट आंसर इज हबो ऑप्शन बी एजुकेटिंग द पेशेंट ऑन द बेनिफिट्स साइड इफेक्ट्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ एडहेरेंस सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 रे सोमाटिक सिम्पटम्स डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए रे एक्सेसिव फोकस एंड फिजिकल सिम्पटम्स कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पायरमेंट ऑप्शन बी इज नो फिजिकल सिम्पटम्स ऑप्शन सी इज ओनली मेंटल सिम्पटम्स ऑप्शन डी इज ए टाइप ऑफ सर्जरी सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा which option is the correct answer correct answer is option A ठीक somatic symptoms disorder involves excessive focus on physical symptoms causing significant distress or impairment next question number 93 रे अछि which is a key therapeutic quality in GPT option D woosiness so which is a key therapeutic quality in nurse
which is a key therapeutic quality in a nurse. So which option is the correct answer? So correct answer is option B, apathy and non-judgmental acceptance. So apathy allows the nurse to understand the patient words without being judgmental, right? So apathy always allows the nurse to understand, right? So therapeutic quality rahiba uchit in a nurse, right? Next question, question number 94 is hallucination versus illusion. Hallucination versus illusion. Option A is both are the same. Option B is hallucination is sensory perception without the stimulus, whereas illusion is a misinterpretation of an actual stimulus. Option C is illusion is more severe. Option D is hallucination is always visual. Most important MCQ beta hallucination illusion पचारुछि हो ना नहीं. So correct answer कौन होगा? Option B is the correct answer, है ना नहीं? Illusion is a real object, whereas हेला option B कौन अछि? Hallucination is a sensory perception without a stimulus, हेला किछि न थाई कि हमें false perception है ना नहीं? False perception without a stimulus किछि न थिबो हमें falsely perceive करबा. Illusion is a misinterpretation of an actual stimulus, हमें ताको misinterpret करबा, right ना? Right. Next question, question number 95. What is incongruent effect? What is incongruent effect? Option A, when the patient's emotional expression does not match their own words or the situation. Option B, when the patient is happy. Option C, when the patient is sad. Option D, normal behavior. So which option is the top? Option A, high blood sugar. Option B, risk of granulocytosis or low WBC. Option C, heartburn. Option D, headache. तो ऑलरेडी हमें पढ़ी सारी छे एग्रानुलोसाइटोसिस बेटा. रिस्क ऑफ एग्रानुलोसाइटोसिस हबो बेटा, है ना? रिस्क ऑफ एग्रानुलोसाइटोसिस. सो हमको WBC रो चेक करवा अछि बेटा, ब्लड टेस्ट करवा अछि, रेगुलर ब्लड टेस्ट करवा अछि, है ना? टू मॉनिटर फॉर बोन मेरो सप्रेशन. WBC हम जानि लेके जानि परबा बेटा, टू मॉनिटर फॉर बोन मेरो सप्रेशन. बोन मेरो सप्रेशन ए ग्रानुलोसाइटोसिस द्वारा कौन हम बेटा बोन मेरो सप्रेशन हो जाउची. सो हमको बोन मेरो सप्रेशन हो जाउची ए ग्रानुलोसाइटोसिस पई लो WBC जोगु, हैला. सो हमको मॉनिटर करबा अछि WBC. repeatedly low WBC रहला ताहले it may be slowly bone marrow suppression हवा बेटा, है ना नहीं? low WBC जोगु. Next question, question number 97 is mental health includes option A is only the absence of mental illness. Option B is emotional, psychological, social well-being. Option C is only high intelligence. Option D is only being happy. So correct answer कौन होगा बेटा? Correct answer is option B, right? Option B is the correct answer. Next question, question only anxiety. Option C is only mania. Option D is only phobias. So which option is the correct answer beta? Schizoaffective disorder symptoms include symptoms. कौन होगा बेटा आंसर? Schizoaffective disorder symptoms include. Which option is the correct answer बेटा? फटाफट आंसर कर दियो.